देखिए, बहुत सारी फिल्मों के जो ट्रेलर्स होते हैं वो 2 मिनट में हमें फिल्म की पूरी कहानी बता देते हैं। लेकिन सून टू रिलीज फिल्म अ थर्सडे का जो ट्रेलर है वो कैप्टिवेटिंग है, इंगेजिंग है, विदाउट गिविंग अवे एनी ऑफ द रियल एक्साइटमेंट। और हम जो ऑडियंस हैं, वी आर लेफ्ट टू वंडर कि फिल्म का प्लॉट आखिर होगा क्या। जानने की कोशिश करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, क्योंकि आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वी हैव द फिल्म्स डायरेक्टर बेजाद एंड ऑफ कोर्स द लीड एक्टर यामी विद अस। लेकिन सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। Thank you, Nidhi. Thank you so much. And this is Punjab Kesari, so might I address all your viewers in Punjabi also. ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ। एंड आई होप यू सपोर्ट द फिल्म। थैंक यू सो मच। यामी, वैसे पता है ऐसा कोई होगा नहीं जिसने ये ट्रेलर देखा नहीं होगा, बिकॉज किश्तों में जैसे आपने चीजें रिलीज की है ना, पहले एक हल्का सा टीजर आया, फिर उसकी आपने प्रमोशन की ट्रेलर रिलीजिंग सून, फिर ट्रेलर आया। तो मुझे लगता नहीं अब कोई ऐसा बाकी होगा जिसने नहीं देखा। एंड एवरीवन नाउ इज इम्पेशेंटली वेटिंग, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आपने इंगेजिंग भी बनाया, कैप्टिवेटिंग भी बनाया, बट कहानी क्या होगी ये हमें पता नहीं चली। तो बेहजाद, आपसे ही थोड़ा जान लेते हैं कि आगे क्या एक्सपेक्ट करें भाई फिल्म से। वो 17 तारीख को सब कंफर्म हो जाएगा व्हेन इट रिलीजेस। बट है, काफी चीजें है, ट्विस्ट है, टर्न्स है, अदरवाइज इट्स पॉइंटलेस मेकिंग अ थ्रिलर। बट या आई मीन जितना दिखा है उतना दिखा सकते हैं, उतने बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, तो जितना दिखा है एक्सपेक्टेशन बार आप बढ़ा चुके हैं, तो अब ये बताइए कि जो ऑडियंस है, बिकॉज थ्रिलर जब भी आता है तो नेल बाइटिंग होता है या एज ऑफ द सीट होता है, ऐसा इस तरह का थ्रिलर पसंद आता है। एंड आपका जो ट्रेलर है, जो टीजर रिलीज हुआ है, वो देख के तो लग रहा है कि भी नेल बाइटिंग। सो इज दैट समथिंग दैट यू कैन एटलीस्ट प्रॉमिस? Yes, I personally feel, I think this will sound pompous, but I feel the trailer does not justify the film. Wow. So I hope my words are true. नहीं तो मालूम पड़ जाएगा सोशल मीडिया पे on the 17th दोपहर तक. So but yeah, I think there's a lot more to the film. It's engaging. I think people should like it. I hope and pray that people like it. Correct. And I think people will, because जिस तरह के comments में देख रही थी, even for the trailer and the teaser, so people are actually impatiently waiting. और जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ये एक ऐसा ट्रेलर लोगों को लग रहा है जिसमें यार कहानी नहीं हमें बताई, बट यस हमारा एक्साइटमेंट जरूर बिल्ड कर दिया है। सो कमिंग टू यू यामी, देखिए पहली जब कोई चीज रिलीज होती है, उसकी एक्साइटमेंट होती है, तो हम इंटरनेट पे जाके उसकी रिसर्च करने लगते हैं। तो ऑफ कोर्स वी डू नॉट नो व्हाट द प्लॉट इज गोइंग टू बी, बट इतना थोड़ा सा पता है कि शायद कहीं आप एक ग्रे शेड प्ले कर रही हैं, विच इज अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो थोड़ा अपने कैरेक्टर के बारे में बताइए, एंड हाउ चैलेंजिंग वाज इट? जी, तो मैं नैना का किरदार निभा रही हूँ। और आई थिंक कभी कभी मुझे लगता है फिल्म शूट करने से ज्यादा फिल्म को एक्सप्लेन करना ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि आप कितना कुछ कहना चाहते हैं बट आप नहीं कह पाते हैं, कि कहना भी नहीं चाहिए आपको। फिल्म आप चाहते हैं सब लोग देखें। तो अगर कम शब्दों में कहूँ तो नैना एक स्कूल टीचर है, जैसे ट्रेलर में समझ में आ रहा है। उसके बहुत प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका वो ध्यान रखती है, जिनके लिए वो किंडरगार्टन टीचर है। बट कुछ होता है, कुछ इस तरह कुछ होता है दैट शी टेक्स देम एज हॉस्टेजेस, और कुछ डिमांड्स हैं। और पर अब वो क्यों है, कैसा है, क्या शी इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, और जैसा ट्रेलर में है कि certainly not, and but ये सब क्यों हो रहा है, of course that's what the film is about। जो किरदार की बात है, नैना अदरवाइज एक आम लड़की है, एक आम लड़की जो एक सिंपल लड़की जो अपने काम से प्यार करती है, अपने काम पर जाती है। और जस्ट लाइक एनी ऑफ अस, एक फैमिली है उसकी, एंड एक रेगुलर डे टू डे रूटीन है। बट समटाइम्स यू नेवर नो क्या किसी के जहन में आता है, या क्या किसी के साथ कुछ, किसी की क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, व्हाट हैपेंस दैट कैन लीड टू सच सर्कमस्टांसेस, या इस तरह का कुछ डिसीजन। तो वो सब है अ थर्सडे। और काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि लोगों को ऑफ कोर्स फिल्म कैसे पसंद आती है। ट्रेलर तो बहुत पसंद आ रहा है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली। ये सब जब अच्छा लगता है तो फिर बहुत अच्छा फील होता है। एंड सारा टीम वर्क है। जब आई एम जस्ट
lucky I've been saying कि thank you बेजाद, आप ये स्क्रिप्ट मेरे पास लेकर आए, वरना कहीं और चली जाती तो मेरे पास नहीं पहुंचती स्क्रिप्ट. So I think I'm glad. और बस अब I think सिर्फ एक हफ्ते की बात है and we'll all be over to you. करेक्ट करेक्ट. अच्छा वैजाद, जब एक थ्रिलर है उसका जो एसेंस है उसको मेंटेन करना फॉर द इंटायर ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली डिफिकल्ट है कि कोई एक मोमेंट, एक लम्हा ऐसा ना आए जहां पर जो ऑडियंस है उसका ग्रिप जो है वो कहीं फिल्म से खत्म हो जाए. बिकॉज हम जो नैरेटिव है उसके साथ साथ थ्रिलर में साथ चलते हैं. मैंने देखा है अक्सर ना, हम लोग भी डिटेक्टिव्स बन जाते हैं, अरे ऐसा होगा, अच्छा अब वैसा होगा. एंड देन आई लव दोस काइंड ऑफ थ्रिलर्स जहाँ पे हमने जैसा सोचा होता है डायरेक्टर बिल्कुल उसके ऑपोजिट कुछ करता है कि अच्छा तुम ये सोच रहे थे, अब ये ऐसा होगा. So is this one of those kind of thrillers? Because that's my favorite genre. So Yes, actually इस पिक्चर में भी ऐसा ही होना चाहिए, where intention is to keep you guessing. But I mean, certain films I've seen, especially in foreign films, they'll give you one or two things that you expect. So you're satisfied and you can tell the person next to you, "Ki dekh, maine bola, hoga," and then take it away completely, change it on its head. And I think Thursday should do that. Should do that, in my opinion. okay, so we are all waiting for that. But Yami, just Even I am. you to know everything, no? I still enjoy watching it. I'm actually watching it again tomorrow. So. वाओ. सो ऑब्वियसली हम भी फिर आपके साथ साथ आपके ही जितना बेसब्री से इंतजार करेंगे. बट यामी, जैसे कुछ थ्रिलर्स ऐसे होते हैं ना जहां पर हु डन इट होता है कि किसने किया होगा, किसने, यहाँ किसने किया हमें पता है, वो ट्रेलर में इतना तो आप लोगों ने दिखा दिया ना. दिस इज लाइक Are you sure? ओ अच्छा, रियली? Yeah. मतलब बेजाद ना, don't मतलब मतलब आप सोच रहे, आप ये चाह रहे मैं फिल्म से पहले ही सोचना शुरू कर दूं कि मैंने जो ट्रेलर देखा वो भी क्या सही था या नहीं था. इसलिए तो इतना लेट ट्रेलर निकाला ना कि 7 दिन का ही स्ट्रेस है सबको. माय गॉड. मतलब मैं अब आई टेक माय वर्ड्स बैक. हु डन इट एंड व्हाई शी डन इट, इफ एट ऑल शी हैज डन इट, ऐसा कुछ है. यामी, I have no idea. माय गॉड. मतलब कुछ भी, मतलब बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ आपने, कुछ भी आप रिवील नहीं करेंगे. See, actually it's interesting what Bezant said, that usually जब एक फिल्म रिलीज होती है तो कम से कम 15 दिन पहले, 20 दिन पहले आप ट्रेलर देखते हैं. There is a big gap, उसमें आपके गाने भी रिलीज हो रहे हैं, कुछ और ट्रेलर्स आ रहे हैं, ये हो रहा है बहुत. You have a long time. But purposely अगर आप देखें, we've just kept it very concise, very very precise. Only 7 days. तो आपको भी लगता है कि यार, is it enough for promotion? Is it enough? But I think the makers are very confident that what we have on hand is something should be good. फिर भी ये सब एक it's still a gamble. You still don't know what the audience, how they feel. हमने तो कोशिश की है. बाकी आजकल इतना सब कुछ ग्लोबली है, हर प्लेटफॉर्म पे, हर किसी के लिए अवेलेबल है कुछ भी देखना. So audience इतनी exposed है to every kind of content and culture and films and web series that you don't know what they're going to like and what they're not going to like, and can they guess, can they not guess. There'll always be audience which will guess हाँ ये, like I'm that audience. But फिर भी कभी कुछ होता है that you miss it and you want to miss it. So it's तभी it's all open to surprises, and as he said, it's just a matter of just 1 month. But promotion, of course, या हम सब जो बातें कर रहे हैं वो एक हफ्ते की हैं, but the attempt is कि फिल्म देखने के बाद it should stay with you for longer. It should stay with you in your heart, on your mind, that what is जो जिस बारे में ये फिल्म है या जिस तरह की ये फिल्म है, that's the idea. Correct. And I wish वो ऐसा हो. And as you said कि audience बहुत evolve हो गई है, but अच्छा content जहां पर भी मिलता है, जिस भी प्लेटफॉर्म में ऑडियंस को मिलता है, इनफैक्ट जिस भी लैंग्वेज में मिलता है, वी लव टू कंज्यूम इट. एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, जो ट्रेलर टीजर अभी तक देखा, इट लुक्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग गुड कंटेंट. सो ऑब्वियसली एज एन ऑडियंस, एज एन थ्रिलर लवर माई सेल्फ, इतना तो आई एम इवन आई एम फीलिंग के दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ दोस फिल्म्स जो रहेगी याद जब भी ऐसी कोई दोबारा फिल्म बनेगी. सो दिस वन विल बी रिकॉल्ड, ऐसा मुझे एटलीस्ट इस तरह की एक वाइब आती है. थैंक यू निधि. You hope so. Thank you. चलिए, मैं वो सवाल अब नहीं पूछती हूँ जो आप लोग मतलब पकड़ के रख रहे हैं कि अब उस दिन पता चलेगा, उस दिन पता चलेगा. मैं वो पूछती हूँ जो प्रोसेस का हिस्सा थी, विच इज बजाद फॉर यू. बहुत कमाल के एक्टर्स हैं, ऑफ कोर्स यामी इज देयर, उनके अलावा नेहा इज देयर, अतुल जी हैं, बहुत सारे और ऐसे फेसेस हैं जिनके इंडिविजुअल काम हमने देखा है, पसंद किया है. सो हाउ वाज इट शूटिंग विद दीज ग्रेट बंच ऑफ एक्टर्स?
So as I maintain, I personally have a very fun set. I mostly work with friends because I'm completely an outsider. So certain people I have worked with along the way are still working with me. And I think that environment, I think our actors also fit in beautifully because sabko masti karni thi, everybody was laughing, joking. So I think it was a very happy set. And even with experienced people like Atul sir, with Dimple ma'am, it was a lot of fun, a lot of fun. So it makes things easier. It takes the pressure off. It makes you feel for that moment, okay, okay, you can pull this off. You're not going to screw it up. So it does help to have a happy set. I'm sure. But Yami, जैसे आप एक intense scene कर रही हैं, the film looks intense, and I'm sure बहुत as an actor आपकी energy जाती है because you give everything that you have to it, all your emotions. But ऐसे में when you're doing all these intense things, कुछ ऐसा वाक्या या कुछ ऐसा आपको याद आता है off the head के which turned out to be funny or something, which you now remember and think, अच्छा ऐसे हुआ था shooting के time. I think the only I was only surrounded by these really cute kids. कि आपको बेजात बताएंगे, मैंने इनको शूट से पहले कहा था that मैं मिलूंगी सबसे, but मैं ऐसे mix up नहीं होंगी ज़्यादा because that I want to maintain that sanity of my part. And when you get really attached, and everything, it becomes, I want to maintain that little thing, and that's it. Because एक बार बच्चों के साथ भी ज़्यादा घुल मिलो, वो भी आपको seriously कहाँ लेंगे शॉर्ट में ये तो ऐसे ही. So I said I want to do it, but oh my God, जिस दिन मैं सेट पे पहले दिन पहुंची हूँ, I just stepped, वो सब घेरा बनाकर आ गए, और I literally fell down because they hugged me so hard. It was impossible for me to be on my feet, and I just gave it. I'm like, oh God, ये picture कैसे shoot होगी? It was the end of method acting. Yeah, but then of course we found my path. I found my way. तो जब भी पर एक टाइम थोड़ा होता था जहाँ मैं बैठ सकती हूँ 5 मिनट के लिए थोड़ा कॉर्नर में, but still they were so cute. I would make them sit on my lap, and we'd play some game they'd made and something. They're first of all so notorious. They're adorable, but itne aware, itne notorious. But it was really cute. मेरे पास हैं छोटी-मोटी videos. I'll release them later. That they never addressed me as Yami Didi or anything. I was Naina teacher for them. Naina teacher, chuchu, Naina teacher. Gas thege ho, Naina teacher. They were ultimate. Oh God, they were so cute. तो यही थे कुछ बीच के moments, जहाँ पे आप ऐसा नहीं है that you're laughing out loud or something, but just आपको कुछ वो ऐसा कर देंगे जो आपको स्माइल ले आएगा मुंह पे, और you just look at them कि वो आपस में जो खेल रहे हैं, that is so cute. कि ठीक है आप बैठ के देख लो 2 मिनट, but हाँ जिस तरह की फिल्म थी, we were having fun, and by fun I don't mean ever by having fun कि you have to crack jokes or pull a prank or pull each other's leg. That's not fun for me. I mean that's okay, that's one part of it, but fun है तब जब आपको मजा आ रहा है काम करने में, आप जितने भी टायर्ड हो, आप जितने भी थके हुए हो, आपके like this was a role जो मेरी bodily was very heavy for me right from day one. I never understood why my legs are feeling so heavy walking on the set, because it was such a heavy role. I think it had taken over kind of my system. But और आप कम सोए हो, आपको कोविड की भी टेंशन है, सेकंड वेव आ रही है, ये है वो है, आप बच्चों के साथ शूट कर रहे हो, you have to make sure they are safe. How they handled, I think Bezaz and the entire team, that's hats off to them. But आप फिर भी excited हो आने के लिए, आप खुश हो कि कैसे गिरते पड़ते आप पहुंच गए सेट पे, आज क्या करना है, अब क्या करना है, अच्छा ये ऐसे करते हैं, नहीं ऐसे करते हैं, एक और शॉट लेते हैं, अच्छा ये ऐसे. So we were so involved in making this film and giving it our best. That's fun. That's a great sense. Correct. But since we were talking about this whole responsibility कि COVID के period में shoot किया, Bezad, I want to put this question to you. It must have been a huge responsibility because एक individual अगर set पे आ रहा है वो अपना ध्यान रख सकता है, but being a director आपको सबका ध्यान रखना है, not just your actors but the entire crew. So how challenging was that? So when we were shooting inside the school, it was a little easier because the number of people were controlled.
लेकिन जब बाहर शूट कर रहे थे, बारिश थी एंड ऑल, तब इट वाज गेटिंग अ लिटिल टफ क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस भी मेंटेन करने पड़ रहे थे. बट अंदर इट वाज टफेस्ट टू हैंडल. I mean, whenever we saw somebody's mask here, which is half of India, we would say, "Bhai, kar le, upar kar le." So it was a constant reminder. Even if I'm not personally doing it, किसी की आवाज तो आती थी, भाई ऊपर कर ले, भाई ऊपर कर ले. So we could hear that through the day. And the kids were another ultimate. We would tell them, I said, "Come on, shot is over. Wear your mask." Nothing. Parents are upstairs. I'll complain. Then they would wear their masks. But and the thing is, you can't control them. You give them an entire play school with actual toys and actual trains and actual little, bunny bugs to pull around. They are uncontrollable. So yeah. And the best used to be, बहुत कुछ intense scene है, कुछ हो रहा है, but सब कुछ समझा दिया है. But one child, I remember this cute little girl, वो अपना ही मार्क बनाती थी आने के लिए. उसको जो करना है वो वही करेगी. उसको मेरे बाल ठीक करने हैं टेक में, तो वो करेगी. उसको कहीं और खड़े होना, उसको लेट जाना है, सब खड़े हैं, उसको लेट जाना है. She'll do it innocently. And what she can had you her do? own track. She had her own track. We can't do anything. Correct. तो हंसी भी आती थी, but वो भी लगता था कि of course we had our हमें रैप भी करना होता था. We had to rap I think sharp at 5:30 every evening, no matter what. So अगर एक, and of course when you're working with kids, आपको वो responsibility, even if there was no COVID, but it shouldn't. You need to give them proper rest also. You need to make sure they're fresh. You need to make sure they're taken care of, well fed, and not कि चलो सिर्फ आपने अपना shoot के चक्कर में whatever happens, it's happened. We are more concerned. I think that way Behzad was very sensitive. He communicated with every child so comfortably and so this thing that they feel it's not a workplace. They feel कि हाँ, मम्मी पापा वहीं हैं, but this is a play school. Yeah. So I think it all comes from the director and Ashley, who's the writer and the co-producer. I think they've all जो पूरा एक system बनाया था कि how to make sure कि crew में कम से कम लोग हों set पर, otherwise it's a big crew. वो सब I think that's amazing. That's a team job, and I think they did a really good job with that. Correct. And why I always want to ask these kind of questions, क्योंकि जब हम एक फिल्म देखते हैं ना, तो वो proper perfect version होता है जो भी behind the scenes हुआ होता है उसका. और as audience हमें नहीं दिखता ना, हमें तो दिखेगा अरे बच्चे कितनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, अरे कितना smooth sailing सब कुछ हुआ होगा. But जब इस तरह के ये सुनते हैं वाक्य, then we know that filmmaking is a process which is fun but tedious at the time. So thank you for entertaining us like this. But coming to you, Yami, how does it feel to shoulder films on your, taking the responsibility of shouldering films? मुझे ऐसा लगता है that as an actress now you're getting your due because you've been there, you've had your fan following, people have loved the work you've done, but now getting films जो कहते हैं ना यामी की फिल्म है. How sweet. Thank you, Nidhi. It'll double after this one. Fingers crossed. That's so sweet. I think हाँ, मतलब लोगों ने तो हमेशा प्यार दिया. And जब भी मैंने communicate किया, जैसे आप जैसे जर्नलिस्ट हैं या जिनको आप फैंस बोलते हैं, आप सोशल मीडिया पे भी हैं, कुछ लोग हैं सर्टन इंडस्ट्री में जिनको आप में पूरा बिलीव है कि आप कुछ we expect something from you, पर उस एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरने के लिए आपको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए. बट फॉर अ राइटर एंड डायरेक्टर टू हैव दैट फेथ इन यू कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, दैट माइट टेक टाइम, that might take another film ki acha. So it just takes that one person's belief to change things for you. It happened with my first film, but जो I'm sure काफी मेरे colleagues ने भी आपसे शायद जब बात की हुई कहा होगा कि this place is not just, it's not so simple as it looks. कई लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे आपको तो इतनी बड़ी हिट फिल्म थी, आप कैश नहीं कर पाए. It's not a check that you go to a bank and you cash and you get cash on hand. It's a lot of things that that go into getting good work and your recognition, and especially मुझ जैसे actors के लिए जो बिल्कुल ही अपने आप एक चले हुए हैं, एक अलग शहर से आप आए हैं. And I have, honestly, I have respect for everybody. चाहे इस इंडस्ट्री से हो नहीं हो, हर एक की अपनी struggles है, हर एक की अपनी जर्नी है, हर एक को अपने आप को प्रूव करना ही पड़ेगा. कुछ लोगों के लिए opportunities मिलना बस आसान होता है,
आपको बार बार मिल सकती हैं, कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है. Like, we have to keep proving it every time with every film. एक जरा सी वो and it gets you 10 steps down, you know. So हर एक चीज का ऐसा बोलते हैं टाइम भी होता है. Maybe that time for me once again, I got good films, I got Kabil, I got certain good films, but I think it was in 2019 with Bala and Uri that things again shifted, gears for me. And then I got a script like a Thursday, and likewise just जो अलग तरह की फिल्में कर रही हूँ. तो I'm glad कि मैंने ये शुरुआत थर्सडे से की है, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कॉन्फिडेंस से कि इट्स नॉट जस्ट कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म करनी है, मुझे भी ये करना. नहीं, ऐसा नहीं है. मैं ये नहीं करना चाहूंगी. आई थिंक आई टुक माय टाइम एंड आई वेटेड फॉर द राइट स्क्रिप्ट फॉर इट टू हैपन. एंड I think a Thursday was that script for me, and I'm so glad that this happened. And बाकी तो सब I think आप सबके हाथ में है, audience, and of course hard work तो करना ही पड़ेगा. I'll have to be with every film. I can't get relaxed कि अच्छा एक ये फिल्म आ गई. जैसे otherwise तो फिर बाला से ही would have been like 20 films, but ऐसा नहीं होता. It still takes time. उस टाइम लगा अरे ये तो comedy भी कर सकते हैं, अरे ये तो ये भी कर सकते हैं. So always that one filmmaker, be it Amar, be it Aditya, be it Behzad, be it Tony Da, which will show that faith and can just change things for you. Baki, I think I've been very lucky that audience never positivity हमेशा रखती है. Correct. They're just waiting कि okay, she'll give us something really good and we'll show her all the love. So Correct. And this is exactly as I said कि you're one of those faces and one of those people, one of those names rather, कि जब भी आपको हम देखते हैं तो हमें लगता है अच्छा कुछ होगा. एंड आपने जैसे कहा कि थर्सडे से शुरुआत हुई है, बट आई विल जेन्युइनली होप कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, एवरी डे, एवरी ईयर, अब ये काम, ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहे. जाते जाते फ्रॉम द बोथ ऑफ यू, आपकी फिल्म में क्या स्पेशल है कि ऑडियंस को उसे देखना चाहिए, तो वो मैसेज आप प्लीज दीजिए. बेहजाद. I think मैं अपने राइटर डायरेक्टर से कॉपी करने वाली हूँ, तो बेहजाद. I think a Thursday should be spoken about every day. Wow. Yami. That's why. Where is Aditya? And he needs to write something nice for me. मुझे लगता है ये एक फिल्म है जो एक बहुत अच्छी इंटेंशन के साथ लिखी गई थी, एक अच्छी इंटेंशन के साथ बनाई गई है और एक अच्छी इंटेंशन के साथ निभाई गई है. और ऑडियंस इन सब बातों को, इन सब एस्पेक्ट्स को समझती है. कैमरा इज दैट मर्सीलेस. आई डोंट थिंक यू कैन चीट द ऑडियंस. आई डोंट थिंक यू कैन चीट कैमरा. अगर ये सब फैक्टर्स हैं, अगर वाकई हमें लगता है, एटलीस्ट हमें जो लगता है कि हमने जो ये फिल्म बनाई है इस इंटेंशन के साथ बनाई है, जो बेहजाद कह रहे हैं, इट शुड बी अ फिल्म टू रिमेंबर बाय. And I hope so. Amen to that. अच्छा, फिल्म भी coincidentally Thursday release हो रही है, right? Yes. Not coincidentally. It is intentionally. Okay, तो Thursday को release होने वाली फिल्म Thursday ही मत देखिएगा. बेहजाद ने जैसे कहा, उसे देखिएगा और हर दिन याद कीजिएगा. And of course, may you keep creating great cinema, and both of you, may you keep entertaining us. Thank you so much for this interview, and wishing you all the luck. Thank you, Nidhi. It was really nice talking to you. Pleasure is all mine. Thank you. Bye. Bye. Thank you, Nidhi. Thank you.